Hello everyone, welcome to another edition of sessions on entrepreneurship. Today I'm going to take up a very important topic because I have finished taking up all the case studies with class 11th and class 12th. Today I'm going to start with Unit 1 of class 11, and from today onwards we'll start the complete syllabus. So बच्चों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और क्योंकि हम सारे केस स्टडीज क्लास 11 12 में से ले चुके हैं, तो अब इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट दैट द बुक शेयर्स विद यू और यू हैव टू टेक अप इन द एग्जामिनेशन. तो जो आज का यूनिट 1 है उसका टाइटल है Entrepreneurship Concept and Functions. This is class 1 and we are going to take up so many points in today's class. So बच्चों, as students are giving me repeated requests कि सर आप units कब start कर रहे हैं, here comes the first one. और एक बहुत important बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इस यूनिट की पहली केस स्टडी है वो है मनसुख भाई प्रजापति की द अर्थ एट दिस इनोवेटर्स फील्ड. तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है. जिन बच्चों ने वो केस स्टडी नहीं देखी है, प्लीज बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास 1 दे शुड use that link in order to check that case study, and afterward they can start with this class 1 of unit 1. तो आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस. पॉइंट्स अंडर डिस्कशन. बच्चों आज की क्लास पे हम 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेंगे. द फर्स्ट वन इज लेट्स स्टार्ट विद द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप. पहली जो टर्म है जिस पर हम बात करेंगे वो है एंटरप्रेन्योरशिप. क्या है एंटरप्रेन्योरशिप? What is the perspective of entrepreneurship? What is the basis of entrepreneurship? We are going to study that. Second point हम लेंगे entrepreneurship has been viewed differently. थर्ड पॉइंट इज यहाँ पर एक रिडल भी है, क्वेश्चन भी है कि क्या ये व्यक्ति जिनका नाम यहाँ पर मेंशन्ड है वो एंटरप्रेन्योर्स हैं. ये आपको हेल्प करेगा पहचानने में एंटरप्रेन्योर्स एंड देयर वे ऑफ वर्किंग. फोर्थ पॉइंट इज द अर्लियर बिजनेस वेंचर्स एंड द फिफ्थ पॉइंट इज अ स्मॉल केस स्टडी ऑन मुंबई डब्बावालास. तो बच्चों आज की क्लास 1 में यूनिट 1 में हम सिर्फ ये 5 पॉइंट्स लेंगे एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1. So the first point is let's start with term entrepreneurship. अब देखिए बच्चों, when we talk about the term entrepreneur, ये आपका सब्जेक्ट भी है कि आपने एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ना है, बट जिस टर्म को हाईलाइट किया गया है वो टर्म है एंटरप्रेन्योरशिप. तो क्या है एंटरप्रेन्योरशिप? व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? व्हाई इट हैज बीन put after entrepreneurship and then enterprise. इसको मैं बहुत डिटेल में लूंगा नेक्स्ट क्लास में, पर आज हम ये समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर क्या है. देखिए एंटरप्रेन्योर बच्चों वो व्यक्ति है जो समाज में कुछ प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करता है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है और उसके बेसिस पर ही innovates or he creates a new product or a service जिससे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है. He observes the problem of the society, he analyzes it, then he creates a product or a service जिससे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में मदद मिलती है, and that specific person is being termed as an entrepreneur. अब एंटरप्रेन्योर बनने के बाद जो भी क्रिया करता है, जो भी कर्म करता है, जो भी एक्टिविटीज करता है, उस स्पेसिफिक टर्म को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है.
मतलब एक व्यक्ति ने काम स्टार्ट किया, अब काम स्टार्ट करके काम चलाने के कंप्लीट प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, कि एक तरीके की क्रिया है, काम करने का तरीका है। काम तो स्टार्ट हो गया, बट उस काम को जब चलाया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है, लोगों तक लेके जाया जाता है, सेल्स एंड मार्केटिंग की जाती है, सबसे पहले प्रोडक्शन की जाती है, उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग की जाती है, इस कंप्लीट प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और उसके बाद वो एक एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं। So the first word is entrepreneur, second is entrepreneurship, and third is enterprise. तो let's start with the term entrepreneurship. अब थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे entrepreneurship के ऊपर, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे, so that whenever this sort of question comes in the paper, you would find yourself in a position where you can answer it properly. अब पहला पॉइंट लेते हैं. It is a ship on a voyage that has on board innovative, creative men and women who like to do all those constructive things which nobody could lay his or her hands on before. तो बच्चों कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक शिप के समान है, जो एक जर्नी पे है, एक वॉयज पे है, और उसके साथ बहुत सारे मेंबर्स ऑन बोर्ड हैं, और वो सब क्रिएटिव हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जो उनके साथ हैं, एंड दे लव डूइंग दोज थिंग्स जो कंस्ट्रक्टिव हैं, जिनमें से कुछ रिजल्ट्स आता है, जो जिन चीजों में कुछ विजन नजर आता है, जिनको करने के बाद लगता है दे हैव अचीव्ड समथिंग, तो कंस्ट्रक्टिव चीजें करते हैं। और इन कंस्ट्रक्टिव चीजों को आज से पहले किसी ने भी हैंड्स ऑन नहीं किया, so they do it for the first time. They are very intelligent and they love doing things which are constructive, which are productive, जिनको करने के बाद किसी को बेनिफिट मिलता है और इनको भी इन रिटर्न बेनिफिट्स मिलते हैं. So this is what first point stands for. It is a ship on a voyage. एक शिप है जो जर्नी पे निकल चुका है, जिसके ऊपर ऑन बोर्ड है इनोवेटिव, क्रिएटिव men and women who like to do those constructive things, productive things which nobody could lay his or her hands on before, जिस काम को किसी ने पहले नहीं किया हो. Second point, they make a fortune out of the ideas. तो बच्चों, there is nothing powerful in this world than an idea whose time has come. तो जो भी एक क्रिएटिविटी की जाती है, इसके पीछे कहीं ना कहीं इसके बैकड्रॉप पे एक आइडिया होता है, और उस आइडिया को जब ये फ्रूटफुल करते हैं, उस आइडिया को ये यूज करते हैं, उस आइडिया के बेसिस पर ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो आइडिया वर्क्स फॉर देम. They have a vision, they have imagination, and on the basis of which they create an idea, and they create a product on that basis. Third point, success never goes to their heads, and each setback makes them bold enough to carve their future aiming for excellence. Now this is one of the most important points, one of the most. उसका कारण ये है बच्चों कि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसको एक एंटरप्रेन्योर का बेस समझ सकते हैं. कहते हैं जब भी एक एंटरप्रेन्योर ऐसा कोई काम करता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको सक्सेस मिल जाए. ये भी तो हो सकता है ना कि सक्सेस ना मिले. हम हमेशा कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, करना हमें ऐसे ही चाहिए कि हमें उसकी एडवांटेजेस देखनी चाहिए, बट डिसएडवांटेजेस दे मूव अलोंग विद द वर्क एज वेल. तो अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल घमंड नहीं होता, वो सक्सेस उनके सिर पर नहीं चढ़ती है. और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो हर सेटबैक उनको बोल्ड बनाता है और उनके फ्यूचर को और निखारता है, और वो और एम करते हैं एक्सीलेंस की तरफ. तो कहने का मतलब है कि अगर हार उनको मिलती भी है तो उससे घबराते नहीं, बिकॉज दे नो कि एंटरप्रेन्योर बनने का ये पार्ट एंड पार्सल है. वो एंटरप्रेन्योर ही क्या जो लाइफ में फेल ना हुआ हो एक बार दो बार, और फिर उसने बोल्डली अपना कदम आगे ना बढ़ाया. अगर एक बार फेल होने के बाद आप पीछे हट के बैठ जाते हैं तो एंटरप्रेन्योर कहलाने का आपको हक नहीं है. तो थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्थ पॉइंट,
Entrepreneurship is the freedom to do what one likes to do with all its attendant profits and risks. So बच्चों entrepreneurship में क्या है, आप जो चाहते हैं, जो प्रोडक्ट्स, जो सर्विसेज देना चाहते हैं, आपको उसकी पूरी फ्रीडम होती है, फ्रीडम दी जाती है, उनको प्रोवाइड करने के लिए सोसाइटी को, पर उसके फिर प्रॉफिट्स भी आपके हैं और रिस्क्स भी आपके हैं. So as I've said, anything you do in business or anywhere in life, it comes with advantages and disadvantages. Because you are doing it, because you are involved, तो वो advantages, वो profits भी आपके हैं और disadvantages भी आपकी हैं जो उससे associated risks. So this is what entrepreneurship stands for. It is a ship on a voyage, and where literate people are there, intelligent people are there, and they do constructive things which nobody has laid their hands before. They make their fortune out of the ideas. Success never goes to their heads, and every setback makes them, bolder than ever. Entrepreneurship is the freedom to do what one likes to do with all its attendant profits and risks. सारे profits भी उनके हैं और risks भी उनके हैं. तो ये चीज उनको एक और आयाम की तरफ लेके जाती है, which is clarity. अगर ये clarity उनके पास नहीं है, तो sorry to say that person is not an entrepreneur. Are we getting it? Let's move on to the next point. Fifth point. Entrepreneurship is defined by results and not by attributes. It is a passion and all about commercial risk. तो बच्चों entrepreneurship को हमेशा आप define करेंगे जो व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग है, क्लैरिटी है और उसका हार्ड वर्क है. काम समझ में आ गया, क्लैरिटी है, क्या करना है. अब थर्ड चीज क्या है कि आपको हार्ड वर्क और लेबर डालनी है अपने काम. आप ये नहीं कह सकते कि आपने बहुत बड़ा ऑफिस खोल लिया, बहुत सारे लोग रख लिए, आपको पता नहीं कि काम करना कैसे. सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लानिंग. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्लान. The next point, continued point है, it is a passion and all about commercial risk. ये passion तो है, but इसमें commercial risks भी हैं. Economically, आपको risk भी आ सकते हैं, which you can never avoid. बड़ी बड़ी companies को आप देख लीजिए, वो बहुत काम करते हैं और वो बहुत सारा products and services बनाते हैं, but in spite of that, they can never avoid the chances of disadvantages or the chances of risks. Next point, sixth point. A true entrepreneur uses not only his or her senses 1 to 5, but 6, 7, 8 and 9. बच्चों जो entrepreneur है, his senses are not limited to 5. Hearing, touch, smelling, taste, वो उस तक सीमित नहीं है. He goes beyond. उनकी दो आंखें आगे भी हैं तो दो पीछे भी हैं. So means to say they can see the future, they can see the past, and they can see here and there as well. So an entrepreneur should not limit himself with what nature has gifted him. उसको उसके beyond सोचना है. अगर बच्चों ये hard work, labor, clarity, understanding, hard work, labor नहीं होगा, तो entrepreneur बनना can be a dream only for a person, not more than that. Seventh point. 6 to 9 do not really exist, but he or she develops them through his or her exposure, experience, failures, and following the concept of listening and understanding. बच्चों 5 senses के beyond है नहीं, but yes, ये जो 9 senses हैं वो develop करते हैं with the help of their exposure, their experience, उनके failures, उनकी learnings, listening and understandings. रोज वो नए नए तरीके के लोगों को मिलते हैं, रोज उन्हें नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं. Certain people, those who support them, certain people, those who do not support them, and both these sort of people, they provide them with a different sort of an experience. जब वो रिजेक्ट होते हैं तब भी उनको एक एक्सपीरियंस मिलता है. When they got accepted, even then they have a new experience. So इन सारे एक्सपीरियंस को amalgamate करके they create different senses for themselves. Sometimes you would have seen there are certain entrepreneurs who speak less, very less. It is so because they spend more time in understanding, in listening to the person, so that they can get clarity
after meeting that person. So 5 senses होती हैं, but एक entrepreneur की he develops more or he or she develops more than 5 senses, which could be 6, 7, 8, and 9. Next, entrepreneurship has been viewed differently. First point, it has evolved through the centuries and it has been viewed differently according to conditions prevailing in the world economy. So बच्चों ये बहुत साल पहले ये इवॉल्व शुरू हो चुका था entrepreneurship, और जैसे जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन थी, इसको डिफरेंटली व्यू किया। कहीं पर काम करने के मौके आसान थे, बिजनेस करना आसान था, वहां पर एक फ्लरिश हुआ। कहीं पर कुछ बिजनेसेस में चैलेंजेस थे, वहां पर एक फ्लरिश कम हुआ। तो पीपल हैड व्यूड और इज व्यूइंग एंटरप्रेन्योरशिप डिफरेंटली। किसी को बहुत टफ लगता है, और कहीं बिकॉज so many facilities are being provided to the entrepreneurs, it seems easy. Second point, the new age business ventures are more idea centric and not just product based. तो बच्चों आज हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं, तो products are required, but what sort of products, whether they are being created as per or according to the existing problems or not, अगर उसके अकॉर्डिंगली नहीं क्रिएट करे गए हैं तो दैट कैन बी अ फियास्को एज वेल। तो आज का जो समाज है वो आइडिया बेस्ड है। एन आइडिया इज फार 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 मोर पावरफुल देन अ प्रोडक्ट। So this is what the beauty of 21st century is. In 21st century, a good idea, a powerful idea is far better than a complete industry. क्योंकि अगर एक आप गलत इंडस्ट्री गलत आइडिया के बेस पे बनाएंगे तो इट इज गोइंग टू ruin your everything that you have invested in the work. Third point, the key success in business is not just inheritance. It is creation of more wealth and the constant innovation from the prevailing to the next best practices. So बच्चों बिजनेस का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आपको बिजनेस अपने फोर फादर से मिल गया, आपने उसे इनहेरिट कर। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कहते हैं अगर आपका पुत्र बुरा है तो धन जोड़ने से क्या फायदा, और अगर आपका पुत्र अच्छा है तो फिर धन जोड़ने से क्या फायदा। क्योंकि अगर बुरा पुत्र है तो आपके जुड़े हुए धन को खराब कर देगा, और एक अच्छा पुत्र है तो वो आपके कम धन को भी विद इनोवेटिव आइडियाज उसे और बढ़ा देगा, वेल्थ को और बढ़ा देगा। तो यही यहाँ पर बात कही गई है कि इनहेरिटेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इनोवेटिवनेस क्रिएटिविटी अपने काम में रखनी है। और मेरी बात अब याद रखिएगा, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको कोशिश करनी है इनिशियल ईयर्स में 24-24 घंटे मेहनत करने, उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप ये सोचिए कि आपका दिन भर का आराम भी पूरा हो जाए, आप रिलैक्स्ड भी रहें और आप काम भी कम करें और आपको रिजल्ट्स भी मिल जाए, it is not possible. The third point is very important. I'm going to clip it here. Very important. Fourth point. Accordingly, a wide range of small and mid-sized businesses have emerged and gained popularity with the affluent middle class, determined to spend more as well as derive value out of every rupee spent. Very powerful. तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 डिकेड्स में कितने सारे businesses they have come up. और ये नहीं है कि उनके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके फादर they were entrepreneurs. No, they were first generation entrepreneurs. They have started with an idea, the idea got clicked, they worked hard with clarity and understanding. देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ से, पहले आपको ना अपने काम की क्लैरिटी होनी चाहिए, कर क्या रहे हैं लिखिए, क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड हार्ड वर्क। अगर आपको अपने काम की क्लैरिटी है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, आप पेपर वर्क करके अंडरस्टैंडिंग अचीव करते हैं, और उसके बाद यू डू नॉट शर्क, आप बिल्कुल पीछे नहीं हटते हार्ड वर्क से, तो सक्सेस आपका। Accordingly, a wide range of small and mid-sized businesses have emerged and gained popularity with affluent, आगे बढ़ती हुई मिडिल क्लास। आज मिडिल क्लास के पास भी अच्छा पैसा है, बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग,
and they are using better ideas to develop good businesses. Determined to spend more as well as derive value out of every rupee spent. वो मिडिल क्लास एफ्लुएंट है, पैसा आ गया उनके पास, वो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं. और द बेस्ट पार्ट इज the customer today is very learned. The customer always tries to derive value from even single penny they are spending. तो कहने का मतलब है कस्टमर आजकल बहुत लर्नेड है. तो आप इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाएं कि जब वो कस्टमर प्रोडक्ट्स को यूज करे तो उसे ये ना लगे कि द कंपनी हैज चार्ज्ड एक्स्ट्रा मनी फॉर दिस बेसिक प्रोडक्ट. प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, ड्यूरेबल हो और लॉन्ग लास्ट. So entrepreneurship has been viewed differently. Let's come to the third point. Are these people entrepreneurs? अब एक बड़ा important question आता है कि एक vegetable vendor, एक newspaper distributor और एक laundry service वाला, क्या ये लोग entrepreneurs हैं? और बच्चों मुद्दे की बात ये है कि हाँ, yes, these people are risk takers. भाई वो सुबह सुबह सब्जी लेके आता है सब्जी मंडी से, सारी गलियों में घूमता है, आवाजें लगाता हुआ कि सब्जी ले लो, और सब्जियों के नाम गिनवाता है. वो रिस्क ले रहा है ताकि उसे, अगर उसने 2000 रुपए की सब्जी अपनी पुश कार्ट पे डाली है तो उससे उसे कम से कम 1000 रुपया अर्निंग मिलनी चाहिए. Similarly with the laundryman, similarly with the newspaper vendor. So the right answer is, to a large extent, they are also risk takers. They may not be innovative, but they take risks up to their own potential and level. वो हो सकता है कि काम बहुत बेसिक लेवल पे कर रहे हो, but yes, whatever work they are doing, they are taking risk at their own level, at their own potential, and yes, ultimately they are entrepreneurs. तो अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि क्या वेजिटेबल वेंडर्स, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर्स और लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आंसर इज अ बिग यस. Let's move on to the fourth point, the earlier business ventures. First point, earlier any business venture was product based, manufacturing of cars, production of dress material, watches, etc. बच्चों अगर हम आज से 50 साल पहले की बात करें या 40 साल पहले की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी बिजनेसेस स्टार्ट होते थे, दे यूज्ड टू बी प्रोडक्ट बेस्ड. सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस कम होते थे. फॉर एग्जांपल आज आप ई कॉमर्स को देख सकते हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. आज आप एक बहुत ही जबरदस्त वर्टिकल है सोसाइटी का, विच इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. लोग कितनी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू रिफ्रेश पीपल्स लर्निंग एंड मेकिंग देयर बिजनेस वेंचर्स फार मोर better than what they were earlier. Second point, if we analyze carefully, we find that there are many entrepreneurs found in these ventures and there was a monopoly in certain areas. तो बच्चों पहले के टाइम पर सिर्फ प्रोडक्शन होती थी, गाड़ियां बनती थी, मशीन्स बनती थी, ड्रेस मटेरियल बनते थे, वॉचेस बनते थे, और बहुत से लोगों का इस पे आधिपत्य था, एक छत्र राज था. फॉर एग्जाम्पल आप घड़ियों की बात करें, अब तो घड़ियों में बहुत सारी रेंज आ गई है, पर पहले सिर्फ एक ही कंपनी हुआ करती थी, विच वाज द गवर्नमेंट कंपनी. तो आप ये देख लीजिए कि लिमिटेड products were there, though they were very limited products, and it was being monopolized by a single company. But now the scenario has changed. Third point, but as the economy grew and companies started competing with one another globally, we see a lot of idea centric and need based companies. Very very important. जैसे जैसे बच्चों कंपटीशन बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो जो बहुत सारी कंपनीज हैं, दे आर बिकमिंग आइडिया सेंट्रिक एंड नीड बेस्ड कंपनीज, मशरूमिंग ऑल ओवर द कंट्रीज. सो बच्चों अब क्या है, ई कॉमर्स का रिक्वायरमेंट है. पीपल आर गेटिंग बिजियर डे बाय डे. Earlier only products are being supplied by e-commerce. Nowadays, from past 5 years, groceries even being supplied by, e-commerce.
ऑन टॉप ऑफ इट आई एम ऑब्जर्विंग नाउअडेज, मैं खुद अपने घर में कई बार मिल्क मंगाता हूँ, ब्रेड मंगाता हूँ, फ्रॉम ई कॉमर्स. सो द क्वेश्चन इज, ये नीड बेस्ड है. ये किसी को समझ में आया कि भैया लोग बहुत बिजी हो गए हैं, दे आर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दे आर वर्किंग, तो छोटी फैमिलीज हैं तो उनके पास मार्केट जाने का टाइम नहीं है. So why not to encash this, challenge of these people and start serving them? तो आइडिया आया और एक नीड बेस्ड कंपनी स्टार्ट हो गई, और ऐसी बच्चों हजारों कंपनीज आ रही हैं आज. सो द सिनेरियो हैज चेंज. पहले सिर्फ प्रोडक्शन होती थी, प्रोडक्ट्स की, ऑटोमोटिव पार्ट्स की, मशीनरी की, सर्विसेज के ऊपर लोग कम ध्यान देते थे. बट नाउ द सिनेरियो हैज चेंज इन 21st century. All the companies, majority of the companies, they have become idea centric, and they are generating need based services for the people. For instance, Mumbai Dabbawalas, scratches, ready to eat food, instant noodles, etc. आज बच्चों मुंबई डब्बावालाज हैं. I'll share a small case study of them with you. क्रैचेस खुल गए हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, छोटा बच्चा है, कहाँ छोड़ के जाएं उसको. सो क्रैचेस आर देयर. क्रैचेस में उन बच्चों की टेक केयर की जाती है थ्रू आउट द डे, और उसके बाद उन्हें पढ़ाया भी जाता है. और रेडी टू ईट फूड है. अब वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि रात को किचन में 2 घंटे लगकर खाना बनाना ही बनाना है. यू कैन ऑर्डर योर फूड एंड विद इन 10, 20, 30 minutes food will be provided at your doorstep. Hot piping food. इंस्टेंट नूडल्स आ गए, वो आप सब जान. आप पानी उबालिए, एक पैकेट खोलिए, उसमें से नूडल्स डालिए, टेस्ट मेकर डालिए, हल्का सा ऑयल डालिए, वेट फॉर 2-3 minutes, इंस्टेंट फूड इज रेडी. सो कहने का मतलब है कि एवरीथिंग दैट इज कमिंग अप नाउअडेज इज आइडिया सेंट्रिक एंड इज नीड बेस्ड. अब बच्चे एक छोटी सी एक्सर्प्ट है, मैंने इसको इसलिए आपकी क्लास फर्स्ट का पार्ट बनाया है बिकॉज आपको जानना बहुत जरूरी है कि मुंबई डब्बा वाला किस प्रकार काम करते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ एक हिंट दिया गया था कि जो एक आइडिया सेंट्रिक और नीड बेस्ड कंपनीज का अगर हम एग्जांपल ले तो मुंबई डब्बा वाला इज वन ऑफ देम. सो मैंने कहा व्हाई नॉट टू गिव यू a 2.5 slide case study to you so that you can get an overview how they work. Let's start. The Mumbai Dabbawalas, also known as the Mumbai Tiffin Box Suppliers, इन्हें मुंबई के टिफिन बॉक्स सप्लायर्स कहा जाता है, are a group of a lunchbox delivery men who operate in Mumbai, India. They are renowned for their efficient and error-free delivery system, which has gained international recognition. So बच्चों ये लाखों डिब्बे रोज घरों से लेते हैं और उनके ऑफिसेस तक पहुंचाते हैं, जो एड्रेसेस होते हैं वहां तक पहुंचाते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज दे आर वेरी एफिशिएंट एंड देयर होल सर्विस इज लिटरली एरर फ्री. एक भी डिब्बा आज तक, एक आधी बार ऐसा हुआ होगा, बट आज तक never heard that they have provided wrong ticket to the wrong address. The Dabbawalas provide a service where they collect freshly cooked meals from the homes of office workers and deliver them to their workplaces during lunch time. सुबह सुबह उनके घरों से ले लेते हैं और लंच टाइम से पहले पहले उनके ऑफिस में उनको पहुंचा देते हैं. These meals are typically packed in tiffin boxes, which are multi-compartment containers made of stainless steel. आप देखिए, आपको नजर भी आ रहा होगा, इनके अंदर इन टिफिन बॉक्सेस को रख लिया जाता है, खाना गर्म रहता है और ऑन टाइम इनको इन स्टील बॉक्सेस में ऑन देयर एड्रेसेस पहुंचा दिया जाता है. The Dabbawalas follows a meticulous system to ensure the accurate and timely delivery of the tiffin boxes. तो बच्चों बहुत ही एक्यूरेट उनका वे ऑफ वर्किंग है. अगर मैं इस पर बहुत डिटेल्ड केस स्टडी बनाऊंगा तो मैं आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दूंगा, बट ये सिर्फ एक ओवरव्यू देना था कि मुंबई डब्बावालास कैसे काम करते हैं. They use a complex coding system consisting of colors, symbols, and numbers to identify the source of destination of each tiffin box. इनका एक कोडिंग सिस्टम है, वो हर डिब्बे के ऊपर लिखा होता है, उससे पता चल जाता है कि ये डिब्बा कहाँ से आया है और इसने किस एरिया में पहुंचना. जैसे आपका लेटर्स के ऊपर पिन कोड नंबर्स लिखे होते हैं, वैसे एक सिस्टम इनके पास भी. The coding helps them sort and group the tiffin boxes efficiently
ensuring that each box reaches its intended recipient. तो इतना यूनिक ये कोडिंग सिस्टम है कि एक भी डब्बा यहां से वहां गलत नहीं पहुंचता है. Fourth point, at the destination train station, the tiffin boxes are again sorted based on the final delivery addresses. इन सारे टिफिन बॉक्सेस को अगर इस ट्रेन से इधर से उधर पहुंचाने होते हैं तो स्टेशन पे इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर सॉर्ट कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द ट्रेन वेयर इट इज गोइंग. तो उस वहां के जो डिब्बे होते हैं उस ट्रेन में उस डिलीवरी मैन के साथ रख दिए जाते हैं, एंड देन ही डिलीवर्स द टिफिन. The Dabbawalas rely on their memory and a unique system of hand signals to identify and deliver the tiffin boxes to the correct offices and workplaces. After lunchtime, the Dabbawalas collect the empty tiffin boxes. Now, this is something very unique. ये नहीं कि भैया हमने आपको लंच बॉक्स पहुंचा दिया है तो आप आकर लेते हुए आना वापस, नहीं. Very, very important point. Very, very important. After lunchtime, the Dabbawalas collect the empty tiffin boxes from the workplaces and return them to the respective homes of the customers. The process is carried out in reverse, ensuring that each tiffin box reaches its original sources. Now, beautiful. And that is what, their unique selling proposition or UVP, unique value proposition. और ये चीज है जो उनके काम में वैल्यू एडिशन करती है. सिर्फ डब्बा पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, डब्बा एक बार खाली हो जाए तो घर वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है. दिस इज समथिंग इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल. मैं जानता हूं जो बहुत सारे बच्चे आज मुझे सुन रहे हैं उस बात को जानते होंगे, पर बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस बात को पहली दफा सुन रहे होंगे, एंड इट इज एन आई. 6th point, the Mumbai Dabbawalas are known for their exceptional accuracy and efficiency. Now, this is what quality work is. They take pride in their work and have achieved a remarkable level of precision with an error rate of less than 1 in 6 million deliveries. और बच्चों इतनी strong accuracy है कि 60 लाख डिब्बों में से एक डिब्बा कभी कभी गलत पहुंच जाता है. The error is negligible. So this is what, and they are not that, educated as well. They are very, limitedly learned people. और जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट आपके साथ जरूर, डिस्कस करूंगा. They take pride in their work. जो व्यक्ति इस दुनिया का, जो व्यक्ति being an entrepreneur, जो व्यक्ति being a businessman, being a job going person, जो व्यक्ति इस दुनिया का अपने काम में गर्व की अनुभूति करेगा, काम उसको सम्मान जरूर देगा. जो अपने काम को सम्मान देगा ना, आप रिवर्ट में देखिएगा कि काम उसको सम्मान जरूर देगा. दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ नेचर इज. 7th point, the Dabbawalas commitment, teamwork and discipline approach have made them an iconic symbol of Mumbai's culture and work ethic. So बच्चों जो इनका कमिटमेंट है, टीम वर्क है, उन्होंने इनको आइकॉनिक बना दिया है, आइडल बना दिया है लोगों का, and work ethic of Mumbai. They have been studied by management experts worldwide for their unique logistics system. कोई वो बहुत बड़े लॉरीज भी यूज नहीं करते, हैंड कार्ट्स यूज करते, साइकिल्स यूज करते. They have been studied by management experts. Management experts हैरान है कि मेहनत कितनी पावरफुल चीज है, कि सिर्फ मेहनत के दम पर और कुछ कोड्स के दम पर वो इतना आगे बढ़ गए. For their unique logistics system which operates without the use of modern technology like computers and smartphones. They are not using computers, they are not using smartphones, and still they are errorless, error free. How they are managing it? The only way to manage anything in this world is clarity, understanding and heart. 8th point, I believe this is the last one. Yes, overall the Mumbai Dabbawalas play a vital role in delivering home cooked meals to office workers, providing a convenient and reliable service that has become integral part of Mumbai's daily life. So बच्चों, they play a very significant role in order to make the city run. जब तक ऑफिसेज में खाना नहीं पहुंचेगा, तो ऑफिस गोअर्स खाना नहीं खाएंगे,
जब तक उनके डब्बे वापस नहीं आएंगे, आकर धुलेंगे नहीं, कल के लिए तैयार नहीं होंगे, it is going to halt the speed of the city to a certain extent. और बच्चों ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इसलिए लिया है बिकॉज हियर वी आर डिस्कसिंग वेंचर्स विच आर आइडिया सेंट्रिक एंड नीड बेस्ड। अब आइडिया क्या है कि लोगों को लंच पर गरम गरम खाना मिलना चाहिए, और कैसे मिलना चाहिए, घर से आना चाहिए। अब लाएगा कौन, लाएंगे हम लोग, हम प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज। और याद रखिएगा, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आपने क्लैरिटी लेनी है, उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और फिर दिन रात एक कर दीजिए, एंड आई एश्योर यू एनीथिंग यू डू यू विल स्टार्ट बिकमिंग सक्सेसफुल। टेक प्राइड इन योर प्रोफेशन। कोई भी काम करे, आज आप स्टूडेंट्स हैं, उस काम में भी गर्व की अनुभूति करनी है। आज मैं एक एजुकेटर, मैं उस काम में गर्व की अनुभूति करूं। सक्सेस इज सेकेंडरी, प्राइमरी आर दीज थिंग्स। सो बच्चों, with this we have come to the end of today's, that is first class of unit 1. हमने अब यूनिट 1 स्टार्ट कर दिया 11 का। मैं वेरी सून आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस यूनिट 1, डू ऑल इट्स क्वेश्चंस and provide you with ample of content to write down your examination answers. तो आज हमने क्या क्या पॉइंट्स लिए हैं, let's sum up. Let's start with the term entrepreneurship. Entrepreneurship is a term which is karma, which is kriya done by an entrepreneur. It is an easiest way to understand it. Second, entrepreneurship has been viewed differently nowadays. Now, 21st century is there. Nothing is product centric. Though it is product centric, but majorly it is being done based on the ideas created. Are these people entrepreneurs? क्या जो वेजिटेबल वेंडर है, जो न्यूज़पेपर वेंडर है, और जो आपके कपड़े धोता है, are these people entrepreneurs? Yes, these people are entrepreneurs because they are taking calculated risk according to their existing potential. The earlier business ventures product based होते थे, but आज के जो business ventures हैं वो idea centric हैं, and need based services are or companies are being started. The best example is Mumbai Dabbawalas, crutches, fast food items. तो ये सब चीजें बताती है कि कैसे need based companies are thriving and mushrooming up. और मैंने आपको एक excerpt दिया है, not a complete case study, excerpt दिया है कि this is the way Mumbai Dabbawalas are justifying the need-based requirements of the people. अब बच्चों मैं आपसे 3 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और 3 क्वेश्चंस आपको दूंगा। प्रैक्टिस के लिए आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, which is from this class 1 of unit 1, and write short notes on the following questions. The first one is, what do you understand by the term entrepreneurship? Give examples. Second is, how has entrepreneurship evolved through the centuries and has been viewed differently according to conditions prevailing in the world economy? Third, what do you understand by idea-centric and need-based companies? क्या होती हैं idea-centric और need-based companies? Give examples to justify your answer. I believe you can do all these 3 questions very well. Summary of today's class ये, क्योंकि मैं अब आपको सिलेबस करवा रहा हूं, तो मैं समरी हर क्लास में आपको दूंगा, so that you can revise what we have done in this class. Summary of today's class: entrepreneurship is a ship on a voyage that has on board innovative, creative men and women who like to do all those constructive things which nobody could lay his or her hands on before. They make a fortune out of the ideas. बहुत ही creative, learned men हैं जो आपके साथ चलते हैं, जो क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग और हार्डवर्क करते हैं, और वो आइडिया के बेसिस पर अपना फॉर्च्यून बनाते हैं। Entrepreneurship has evolved through the centuries. बहुत सालों से चलती हुई आ रही है। आने वाले यूनिट्स में, आने वाली क्लासेस में, नेक्स्ट ईयर आप और पढ़ेंगे इसके बारे में 12th क्लास के अंदर। Entrepreneurship has evolved through the centuries and it has been viewed differently according to conditions prevailing in the world economy. The new age business ventures are more idea-centric and not just product-based. Earlier, any business venture was product-based, manufacturing of cars, production of dress material, watches, etc. But as the economy grew, the companies started competing with one and another globally. We see a lot of idea-centric and need-based companies mushrooming all over the countries. So बच्चों सिर्फ ये इसलिए synopsis दिया गया है
कि अगर आप पूरी यूनिट 1 को अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो with the help of this synopsis you can understand what we have done in previous 10-15 slides. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विच इज आर यूएसपी, मैं अपनी केस स्टडीज में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देता था, और इसमें भी मैं आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर दूंगा, बिकॉज जो हमारा सिस्टम ऑफ पेपर है इट इज बेस्ड ऑन दिस. लेट्स टेक अप द फर्स्ट क्वेश्चन. As the economy grew, the companies started competing with one another globally. We see a lot of idea-centric and need-based companies dash all over the country. Now, this is the question which has been asked in CBSE papers. And the answer is mushrooming. No other word, mushrooming. Mushrooming is like this, but it starts in the छोटे से वो develop होता है, it starts like this. Second question. Entrepreneurship has evolved through the centuries and it has been viewed differently according to condition dash in the world economy. The right answer is prevailing. Third, success never goes to their heads and each setback makes them bold enough to carve their future aiming for dash. Success never goes to their heads. Now, यहाँ their बच्चों क्या है? There है entrepreneurs. These theirs are Fourth question. Entrepreneurship is the freedom to do what one likes to do with all its attendant profits and risks. Whether this is true or false, right, it is true. Fifth question. Earlier, any business venture was product-based. Manufacturing of cars, production of dress material, watches, etc. Whether this is true or false, it is true. Sixth question. The new age business ventures are more dash and not just product-based. What are they based on? Ideas. So the new age business ventures are more idea-centric and not just product-based. Seventh question. The key to success in business is not just dash. It is creation of more wealth and constant innovation from the prevailing to the next best practices. So the key to success in the business is not inheritance. सिर्फ business का मिलना ही बहुत नहीं है. You need to innovate and you need to earn more wealth from it. Eighth question. Entrepreneurship is defined by results and not by traits or attributes. It is a passion and all about no commercial risk. Beautiful statement. आपने सिर्फ इतना बताना है कि यह statement सही है या गलत है. This is a wrong statement. Though entrepreneurship is defined by results and not by attributes, yes, it's a passion and it's all about commercial risk. No commercial risk is a wrong statement. Ninth question. A true entrepreneur uses not only his or her senses 1 to 5, but 6, 7, 8 and 9. जो बच्चे इस क्लास को बिना किए एग्जाम को अटेंड करेंगे तो उन्हें शायद लगेगा कि गलत है. 5 सेंसेस के अलावा तो होते ही नहीं है. तो अगर ये 9 सेंसेस की बात कर रहे हैं तो शायद ये गलत आंसर. नो, दिस इज नॉट अ रॉन्ग आंसर. This is absolutely the right answer. With their experiences and understanding, they develop few more traits in them. Last question. 6 to 9 senses do not really exist, but he or she develops them through his or her exposure, experience, failures, and following the concept of listening and understanding. You just have to tell it whether this statement is true or false. Yes, this statement is true. Because 6 to 9 senses do not really exist, but yes, he develops them through his or her exposure, experiences, failures, and following the concept of listening and understanding. So, bacho, with this last question, 10th one, today we have taken 13 questions, we have taken a summary, we have taken, so many points in today's Unit 1, Class 1. I believe this is of help. This is going to help you a lot. I have started with the units and now we are going to finish off units on units. And I'm going to do a unit completely from point 1 to point last. So thank you very much. And जो सत्यव्रता मनसुख भाई प्रजापति की केस स्टडी है, it is shared with you in the link. जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो लिंक यूज करके उस केस स्टडी को जरूर देखें.
because without it, you should not start with this unit. So, bacho, and one more thing, you people are giving me a very good response. I'm really liking it. Because आप अगर मुझे ऐसे रिस्पॉन्ड करते रहेंगे, मेरे काम को पसंद करते रहेंगे, shall keep making more. So thank you very much for all your efforts, and keep liking my work, keep sharing it and subscribing it. Reason being, there are hundreds of people across the or students across the country who requires attention on entrepreneurship as a subject. So this is my link of a profile. This is my link of another YouTube channel as well. So until meet next time, it's a presentation by Team Mavericks India Solution. With Mavericks India, you will always create. So bye-bye for now. God bless you all.